Hello lovely people out there, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. In our previous video discussion, हमने अपने चैनल पे एक बहुत ही important concept लेकर आए थे and the name of that particular concept was alpha adrenergic receptor blockers. In those previous video discussion, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है about our alpha adrenergic receptor blocker. We saw the basic classification of our alpha adrenergic receptor blocker. ये जो alpha adrenergic receptors होते हैं वो हमारी बॉडी में कौन से लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं and when we stimulate those alpha adrenergic receptor on a particular location, what will be its effect? and वही सेम लोकेशन पे जब हम alpha adrenergic receptor को ब्लॉक करते हैं what will be its effect? ये भी हमने अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है. Then we move on to our most important element and that is the therapeutic usage of our alpha adrenergic receptors. In today's video lecture, we are going to see some basic kind of multiple choice question and वो multiple choice question जब हम discuss कर रहे होंगे, we will also deal with the concept that is related to those multiple choice question. So let's move on to our very first question of this video lecture. Our first question is, which of the following is a selective alpha-2 adrenergic receptor antagonist? Our options are A. Prazosin, B. Phentolamine, C. Yohimbine and D. Clonidine. Now यहाँ पे the most important thing you need to understand is, यहाँ पे question में ये पूछा गया है कि select a drug which is selective alpha-2 adrenergic receptor antagonist. When we were discussing about the basic classification of our drugs that is alpha adrenergic receptor blocker, हमने alpha adrenergic receptor blocker को two categories में divide किया था. The very first one was a selective alpha adrenergic receptor blocker and we had non-selective alpha adrenergic receptor blocker. इस particular question में हमें ये पूछा है कि which of the following is a selective alpha-2 adrenergic receptor blocker. So let's first see the classification of our selective alpha adrenergic receptor blocker. In those selective alpha adrenergic receptor blocker, again we had two main classification. That is, कुछ ऐसे drugs होंगे जो selectively हमारे alpha 1 adrenergic receptor को block करेंगे and the name of such drugs are Prazosin, Terazosin, Doxazosin, Tamsulosin and we have Alfuzosin. On the other hand, कुछ हमारे ऐसे drugs होते हैं which is selectively blocking our alpha-2 adrenergic receptor and वहाँ पे मैंने ये बोला था कि you just need to understand or you just need to remember only one important drug which is coming in the category of selective alpha-2 adrenergic receptor blocker. And the name of that drug is Yohimbine. So यहाँ पे we have been asked about the selective alpha-2 adrenergic receptor antagonist and the correct option is option number C, that is Yohimbine. Now remember कि ये जो Yohimbine है, it is not having any kind of therapeutic usage. So you just need to remember the name of the drug which is coming in the category of selective alpha-2 adrenergic receptor antagonist. Now अगर यही same question में अगर ऐसा पूछा गया होता कि which of the following is a alpha-2 adrenergic receptor agonist, so in that particular scenario जो correct option होगा that will be our option number D, that is clonidine. So ये जो clonidine होता है that is alpha-2 adrenergic receptor agonist. ये क्या करते हैं, जो प्री साइनेप्टिकली हमारे अल्फा-2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको स्टिम्युलेट करेंगे एंड बाय स्टिम्युलेटिंग दोस अल्फा-2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर इट विल शो द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड उसकी वजह से जो नॉर एड्रीनालिन का रिलीज है इनटू द साइनेप्स वो कम हो जाएगा. सो ऐसे ड्रग्स जो होते हैं विच आर स्टिम्युलेटिंग अवर अल्फा-2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्री साइनेप्टिकली, they can be used for the condition of hypertension. Now we all know कि ये जो prazosin होता है that is selective alpha 1 adrenergic receptor antagonist and ये जो phentolamine होता है that is coming in the classification of our non-selective alpha adrenergic receptor blocker.
Now moving on to our second question. The prostatic urethral muscles are relaxed by. Our options are adrenergic alpha 1 agonist, option B adrenergic alpha 2 antagonist, option C adrenergic alpha 2 antagonist, and we have our option D, that is adrenergic alpha 1 adrenergic receptor antagonist. Now जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन दी गई है, सो जस्ट यू नीड टू थिंक कि वो पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन सा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे फ्रॉम अवर बेसिक वीडियो डिस्कशन हमें ये पता है कि ऑन अवर प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा वी हैव द प्रेजेंस ऑफ अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर. जब हम ये प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा पे अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करते हैं, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है टू अवर यूरिन आउटफ्लो वो बढ़ जाएगा. ऑन द अदर हैंड, अगर यही प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा पे जो हमारे अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अगर हमने उसको ब्लॉक कर दिया, इट विल शो इट्स अपोजिट एक्शन, यानी कि जो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा का डायामीटर है वो थोड़े हद तक रिलैक्स हो जाएगा एंड जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाएगा. So the person can easily pass the urine. Now ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि मसल को हमें रिलैक्स करना है, एंड अभी हमने देखा कि whenever we are blocking our alpha 1 adrenergic receptor which is present on our prostatic urethra, जो यूरेथ्रा की मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है. So the correct option would be our option number D, that is adrenergic alpha 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. नाउ ये जो एंटागोनिस्ट होता है इसे हम ब्लॉकर के नाम से भी जान सकते हैं. नाउ अगर यही क्वेश्चन को अगर हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते. हमें ये पता है कि ऑन अवर प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा वी हैव द प्रेजेंस ऑफ अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एंड हमें ये पता है कि ऑप्शन में दो ऑप्शन ऐसे हैं which is stating the presence of alpha 2 adrenergic receptor. So as you can see on your screen, जो option number B है that is containing alpha 2 adrenergic receptor, and जो option number C है that is containing once again alpha 2 adrenergic receptor. So हमें पता है कि prostatic urethra पे we do not have alpha 2 adrenergic receptor, so option number B and option number C are getting eliminated. हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन पे फोकस करना है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी. एंड फ्रॉम अवर बेसिक इंफॉर्मेशन हमें ये पता है कि जब हम एड्रीनर्जिक अल्फा 1 एगोनिस्ट देते हैं which will stimulate our alpha 1 adrenergic receptor which is present on our prostatic urethra, it will not relax our urethral muscle, rather it will contract and जो resistance है वो और बढ़ जाएगा. So option number A भी यहाँ से eliminate out हो जाता है. So we are left with only one option, that is our correct option, that is option number D. Now moving on to our third important question. Select the drug which can improve urinary flow rate in BPH without affecting prostate size. We have options. Our options are amphetamine, B prazosin, C finasteride and D goserelin. Now जब हम BPH की बात कर रहे थे वहाँ पे I told you there are two important components. The very first component is known as a dynamic component and the second component is known as static component. At that time I told you कि ये जो dynamic component होता है that is mainly related to the smooth muscle tone. And we know कि जो हमारे प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा होते हैं they are containing alpha 1 adrenergic receptor. जब यही अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जब हम ब्लॉक करते हैं तो ये जो यूरेथ्रा की साइज होती है वो रिलेटिवली बढ़ जाएगी एंड जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था पेशेंट वो कम हो जाएगा. सो द पेशेंट कैन इजीली पास द यूरिन. नाउ व्हेनेवर वी आर प्लेइंग विद द स्मूथ मसल टोन, यानी कि बाय गिविंग अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर हम क्या कर रहे हैं, जो स्मूथ मसल्स होते हैं यूरेथ्रा पे उसको थोड़े हद तक रिलैक्स कर रहे हैं, यानी कि
this particular element is known as our dynamic component. And whenever the dynamic component is coming into the picture, just remember that it is for the symptomatic relief. On the other hand, ये पूरे के पूरे सिनेरियो में जो प्रोस्टेट की साइज है वो कांस्टेंट है, and that constant is known as our static component. So we saw the treatment of BPH, that is dynamic component को हमें अगर treat करना है, we can give such kind of drugs like we can give prazosin, doxazocin, alfuzosin, terazosin. By giving such kind of drugs, ये क्या करेंगे, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा पे जो अल्फा 1 ए एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इट विल ब्लॉक दोज अल्फा 1 ए एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एंड उसके वजह से जो रेजिस्टेंस टू द यूरिन आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा, सो द पर्सन कैन इजीली पास द यूरिन. सो इन आवर क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि सिलेक्ट द ड्रग which can improve the urinary flow rate in BPH without affecting prostate size, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट द डायनामिक कंपोनेंट. एंड अभी हमने पढ़ा कि प्राजोसिन कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी अवर ऑप्शन नंबर बी. बट अगर यही क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि सिलेक्ट द ड्रग विच कैन इंप्रूव बाय अफेक्टिंग द प्रोस्टेट साइज, सो वहां पे वी नो दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक कंपोनेंट. एंड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन हम पेशेंट को 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स देते हैं. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज इज finasteride. So for the treatment of static component, we will give the patient finasteride. So वहाँ पे in the static component, we will give our option number C as our correct option. Moving on to our next question, that is the non-selective alpha adrenergic blockers produce the following actions except. Now जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, we need to understand कि एक एक ऑप्शन हम पढ़ते हैं and try to eliminate those options. The very first option is postural hypotension. Now when we were dealing with the important side effect of our alpha adrenergic receptor blocker, at that time I told you that one of the side effect of our alpha blocker is first dose phenomenon. ये फर्स्ट डोज फेनोमेनन में क्या होता है, whenever the person is taking alpha adrenergic receptor blocker for the first time, he can develop postural hypotension. Now postural hypotension की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए we can use two strategies. The very first one is we can give our alpha adrenergic receptor blocker at bedtime, and usually जो हम इनिशियल डोज देते हैं वो स्मॉल होता है. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें यह पूछा गया है कि ऐसा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है जो नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देने से नहीं प्रोड्यूस होता. सो पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है, सो आवर ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड. मूविंग ऑन टू ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मियोसिस. हमें यह पता है कि जो हमारे रेडियल मसल्स होते हैं इन अवर ह्यूमन आईज, दे आर कंटेनिंग अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. एंड जब हम वो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जो प्यूपिल का साइज होता है वो कम हो जाता है. एंड दिस रिडक्शन इन द डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज नोन एज मियोसिस. सो अवर नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कैन शो दिस इफेक्ट. सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज इम्पेयर्ड इजैक्यूलेशन. एंड ये जो इम्पेयर्ड इजैक्यूलेशन होता है, दैट इज सीन बाय गिविंग नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर. सो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाता है. वी आर ओनली लेफ्ट विथ वन ऑप्शन, दैट इज ब्रैडीकार्डिया. नाउ व्हाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट? हमें यह पता है कि व्हेन वी गिव द पेशेंट नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, इट इज ब्लॉकिंग बोथ अवर अल्फा 1 as well as it is blocking our alpha 2 adrenergic receptor. When we are blocking the presynaptically present alpha 2 adrenergic receptor, वो क्या करते हैं कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को इनहिबिट करेंगे, so there will be relatively more release of norepinephrine,
एंड हमें ये पता है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है इट इज हैविंग बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एक्शन. सो बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन अवर ह्यूमन हार्ट को जब हम स्टिम्युलेट करते हैं इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट इज नोन एज टैकीकार्डिया. सो यहाँ पे इट इज रिटन ब्रैडीकार्डिया. सो बाय गिविंग non-selective alpha adrenergic receptor blocker, the patient can develop tachycardia but not bradycardia. So इसीलिए हमारा option number D will be correct. Moving on to our next important question. Which of the following is a selective alpha 1A receptor blocker that affords symptomatic relief in BPH without producing significant fall in the blood pressure? Our options are A. Terazosin, B. Doxazosin, C. Alfuzosin, and we have Tamsulosin. We need to understand the basic classification of our alpha-1 adrenergic receptor. When we were talking about the basic division of our alpha-1 adrenergic receptor, at that time I told you that we can divide our alpha-1 adrenergic receptor into further two main categories. The very first one is alpha 1A adrenergic receptor and we have alpha 1B adrenergic receptor. ये जो alpha 1A adrenergic receptor present होते हैं they are mainly seen on our prostatic urethra and जो हमारे alpha 1B adrenergic receptor present होते हैं they are mainly seen on our blood vessel. So in this particular question हमें ये पूछा गया है कि which of the following is a selective alpha 1A receptor blocker. So वहाँ पे हमने एक चीज डिस्कस की थी कि if a patient is coming to you and उसे सिर्फ BPH की प्रॉब्लम है and hypertension की प्रॉब्लम नहीं है, in that particular scenario हमें ऐसे ड्रग्स देने होंगे which is blocking our alpha 1A adrenergic receptor which is present on our prostatic urethra. वहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में पढ़ा था which is a uroselective alpha 1 blocker which is mainly blocking our alpha 1A adrenergic receptor and the name of that particular drug is Tamsulosin. So remember ये जो Tamsulosin होता है that is mainly preferred for the patient who is having only and only BPH condition and उनका जो blood pressure होता है that is normal. So in this particular question, our option number D will be correct. That is Tamsulosin. Moving on to the next question. Which of the following class of drugs are not given alone in the condition of pheochromocytoma? And यहाँ पे bracket में हमें एक important information दी गई है. That is both adrenaline and noradrenaline releasing tumor. Our options are alpha adrenergic receptor blocker alone, B. alpha and beta blocker together, option number C. beta blocker alone, and we have option number D that is none of the above. हमने एक important table बनाया था जहाँ पे pheochromocytoma को हम दो basic classification में divide कर सकते हैं. The very first one was adrenaline producing tumor and the second one is noradrenaline producing tumor. वहाँ पे हमने तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर किया था. दैट इज कैन अल्फा ब्लॉकर अलोन बी गिवन इन बोथ दिस कंडीशन, कैन बीटा ब्लॉकर अलोन बी गिवन इन बोथ दिस कंडीशन, एंड लास्टली हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दैट इज कैन अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर टुगेदर बी गिवन इन द कंडीशन ऑफ pheochromocytoma. Now in this particular question हमें ये बोला गया है कि which of the following class of drugs are not given alone in the condition of adrenaline as well as noradrenaline releasing tumor. And from our table we can see कि जो हमारे beta blockers होते हैं they are not given in both the condition that is adrenaline producing tumor as well as noradrenaline producing tumor. So in this particular question जो हमारा correct option होगा that will be our option number C that is beta blocker alone. Now the question is why beta blocker alone cannot be given in both this particular condition. So we know कि जो हमारे blood vessels होते हैं
we have the presence of alpha 1 adrenergic receptor and we have the presence of beta 2 adrenergic receptor. When we block only our beta 2 adrenergic receptor by giving beta blocker, तो क्या होगा कि adrenaline will work purely on our alpha 1 adrenergic receptor and patient का जो blood pressure होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. So in the condition of adrenaline releasing tumor, beta blocker alone are contraindicated. On the other hand, ये जो noradrenaline है, noradrenaline is also having the power to stimulate our alpha 1 adrenergic receptor. So whenever we are blocking our beta 2 adrenergic receptor, noradrenaline will also act on our alpha 1 receptor and उसके वजह से जो patient का blood pressure होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. And moreover, ये जो beta 2 adrenergic receptor होते हैं ये सम अमाउंट में अपोज करते हैं टू अवर अल्फा 1 की एक्टिविटी. सो अगर हमने बीटा 2 को ही ब्लॉक कर दिया तो अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिविटी को अपोज करने वाला कोई नहीं होगा. सो इसके वजह से जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो इसलिए वी आर नॉट गिविंग बीटा ब्लॉकर अलोन इन बोथ द कंडीशन, दैट इज एड्रीनालिन रिलीजिंग ट्यूमर एज वेल एज नॉट एड्रीनालिन रिलीजिंग ट्यूमर. Moving on to our next question. Alpha blockers are given in which of the following condition? Option A is peripheral vascular disease. Option B is pheochromocytoma. Option C is hypertension. And our option D is scorpion sting. Let's take this option one by one and just we will think कि क्या हम इस condition में alpha adrenergic receptor blocker देते हैं या नहीं देते हैं. Our first option is peripheral vascular disease. In the condition of peripheral vascular disease, we are giving alpha adrenergic receptor blocker because हमें ये पता है कि जो peripheral vascular disease होती है वहाँ पे जो periphery में हमारे blood vessels होते हैं they are more prone to vasoconstriction. So by giving such kind of drugs which are blocking our alpha 1 adrenergic receptor, रिलेटिवली इट विल शो डायलेटेटरी प्रॉपर्टी एंड थोड़े हद तक ये जो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज की कंडीशन है वो हम सॉल्व कर सकते हैं. सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज अल्फा ब्लॉकर्स आर गिवन. मूविंग ऑन टू आवर सेकंड ऑप्शन दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा. इन द कंडीशन ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा एज वी नो कि यहाँ पे जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है एंड टू treat such kind of patients, we can give alpha adrenergic receptor blocker, and in the condition of pheochromocytoma, we are giving non-selective alpha adrenergic receptor blocker. So option number B में भी हम alpha blockers देते हैं. Moving on to the C option, that is hypertension. So hypertension में to solve the condition of mild to moderate hypertension, we are giving the patient selective alpha adrenergic receptor blocker, and to solve the problem of severe hypertension we give the patient non-selective alpha adrenergic receptor blocker. So once again in the condition of hypertension we are giving the patient alpha adrenergic receptor blocker. Option number D, that is scorpion sting. In the condition of scorpion sting we are giving alpha adrenergic receptor blocker. Why? Because हमें पता है कि जो स्कॉर्पियन का वेनम होता है that is a very powerful potent alpha 1 adrenergic receptor agonist. So to cure, or we can say to avoid the harmful manifestation of stimulation of our alpha adrenergic receptor, we can give prazosin like drugs which will block our alpha adrenergic receptor and जो venom stimulation cause कर रहा था टू अवर अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर वो नहीं शो होगा. सो थोड़े हद तक जो हार्मफुल मैनिफेस्टेशंस होते हैं ऑफ द स्कॉर्पियन स्टिंग वेनम वो हम सॉल्व करते हैं. सो इन द कंडीशन ऑफ स्कॉर्पियन स्टिंग वी आर गिविंग द पेशेंट अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अल्फा ब्लॉकर्स आर गिवन इन द कंडीशन ऑफ पीवीडी, फियोक्रोमोसाइटोमा, hypertension, and also it can be given in the condition of scorpion sting.
So that's it for today's video lecture. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, please consider subscribing to my YouTube channel. Press that bell icon. Like this video and share it with your friends. See you in the next video. Till then, see ya, bye bye. Have a good day.